Hey guys, what's up and welcome back to another video. Today we're going to be making mango squash. Assalamu alaikum, आज हम mango squash बनाएंगे. So let's get started. अब हम शुरू करते हैं recipe को. For the first step of this recipe, we're going to be needing 1 kilogram of cubed mangoes, 1 kilogram cubed alm, half a liter of water, आधा liter पानी, and 1 teaspoon of salt or 1 teaspoon नमक. We're going to add our mangoes and water to a pot. पहले हम अपना आम और पानी एक pot में डाल रहे हैं. We're going to put the pot on medium-high flame. फिर हम अपने pot को medium-high flame पर रख रहे हैं. Then add your salt. फिर हम नमक add कर रहे हैं. And then we're going to let it cook for 25 to 30 minutes. फिर हम इसको 25 to 30 minutes के लिए cook होने दे रहे हैं. The next step, we're going to be needing 1.5 kg of sugar. अगले step के लिए हमें चाहिए 1.5 kg चीनी और 1 liter पानी and 1 liter of water. Now we're going to put the water and the sugar. अब हम पानी को चीनी में डाल रहे हैं और फिर हम इसको 10 to 15 minutes के लिए medium flame पे चूल्हे पे रखेंगे. Then we're going to put it on the stove for 10 to 15 minutes on a medium flame. Once the consistency is thick and our sugar syrup has reached a light boil, that means it is ready and we're ready to take it off the stove. जब consistency thick हो जाएगी और light boil reach हो जाएगा, हम अपने sugar syrup को उतार लेंगे और we're ready है. Now we're going to strain the mango pulp that we made and we are going to add it to our sugar syrup. अभी जो हमने mango pulp बनाया था, हम उसको strain करेंगे और अपने sugar syrup में add करेंगे. Once you add the mango pulp to the sugar syrup, you're going to add in a 1/4 teaspoon of orange food coloring. जब आप mango pulp को sugar syrup में डाल दोगे, आप 1/4 teaspoon food coloring का डालोगे, orange food coloring का. It comes to a boil, you can turn the stove off and let it cool for 1 hour. जब ये boil पे आ जाए, आप चूल्हे को बंद करके इसको room temperature में 1 घंटे के लिए cool down होने देंगे. There you have it, our mango squash is ready. हमारा mango squash तैयार हो गया. It is amazing and you guys should definitely try this recipe. आप ये recipe ज़रूर try करना. You can pour these into any fancy bottles or containers and give these as summer gifts and they're just fantastic. आप इनको कोई भी bottle में pour करके कोई summer gift कोई ऐसा आप दे सकते हो. बहुत प्यारा लगता है ये. और that's it. Bye.